Hi student, today I am going to discuss your EDC or electrical design estimation and costing chapter. Okay, also your this chapter also complicated by your syllabus topic wise, and in the last video I also provide you the transformer design. Okay, this is the last chapter, but from today I am trying to revise your chapter wise the important thing which is comes into your final exam. Okay, so basically I also started in your class the lighting scheme, okay, or design of lighting circuit. Okay, design of lighting circuit is also with the complete design of lighting circuit will also be the complete in your class, but I am who missed this class, I am also started from this chapter design of lighting circuit. Okay, I am from this chapter and also started revise from this chapter. Okay, और हर एक चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे और फ्रॉम दिस चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम रिवाइज करेंगे. ओके, बेसिकली डिटेल्स में हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो एग्जाम में आते हैं तो सबको हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर डिजाइन ऑफ लाइटिंग सीरीज. दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ योर syllabus. The first chapter is very simple, easy. Some of laws or something are present in first chapter also. If if time is much more, if I get, then also discuss the first chapter also be. Okay, so first one, design of lighting circuit is nothing but we also started in your class design of lighting circuit and also completed all of total are completed in your classes. Okay, so first of all I take a question from this chapter. Okay, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हर सेमिस्टर हर एग्जाम पे आते हैं. एक क्वेश्चन 10 मार्क का एक क्वेश्चन जो आता है. ओके, सो बेसिकली आई टेक अ क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रीड अ क्वेश्चन एंड हाउस this is 12 multiplication 8 into 4 meter. Okay, that's mean the width and height of this room are, this is suppose this is 12 and this is 8 width and this is a 4 meter. That's mean the height of the from the floor to ceiling height is the 4 meter. Okay, this is to be illuminated by a 2 in 40 watt fluorescent lamp. 2 in 40 watt fluorescent lamp means suppose this is the single tube light. Okay, somewhere you also see that the two tube light are consist in a single frame. Okay, consist in a single frame. This is called twin. Okay, so this is the twin fluorescent lamp fixture. Okay, the lumen output of each lamp is 1500 lumen. Okay, that's mean the lumen output each lamp, that's mean here also twin lamp, per lamp lumen output is how much? 2015 lumen. Okay, so two fluorescent tube are taken in a single fixture. Okay, so the total lumen output by a fixture is how much? 2015 into multiplication with 2. Okay, let's left it. इसको पहले छोड़ो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. 1500 lumen. Average illumination required is 300 lux. Average illumination required means हम जिस रूम का डिजाइन कर रहे हैं, सपोज दिस इज द रूम. ओके, दिस इज द रूम और इसका जो इल्यूमिनेशन रिक्वायर होगा जो यहाँ पे उज्जवल मतलब इल्यूमिनेशन गिरेगा लाइट से, वो कितना रहेगा? 300 लाख में हम लोगों को नीडेबल है. ओके, सो डिटरमाइन द टोटल फिक्सर रिक्वायर. सो इसके लिए हमको कितना ट्यूबलाइट सेट रिक्वायर होगा, सॉरी फ्लोरोसेंट सेट रिक्वायर होगा. ओके, दे आर गिव सम assumption. UF mean we also discuss in details UF, MF and other central lux, what is candela. Okay, UF mean utilization factor. Okay, this is given a 0.6 and MM mean maintenance factor, that is 0.00. We also when we also solve the problem we can easily understand what is the UF and what is the MF. Okay, so first of all we calculate the area. What is the area? The area is 12 into 8
into 4. Okay, sorry, 1 second. Sorry, first of all we discuss the UF and MF. Okay, what is the UF and what is the MF? We also discuss in your class what is the UF and what is the MF. So UF means utilization factor. Okay, this is the utilization factor. Utilization factor means total lumen reaching on the working plane. Total lumen reaching on वर्किंग प्लेन मीन्स सपोज अगर यहाँ पे एक लाइट जल रहा है तो यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है और उसका टोटल लाइट जो इस फ्लोर में गिर रहा है उसको बोलता है टोटल लुमेन रीचिंग ऑन द वर्किंग प्लेन. ओके, रीचिंग ऑन द वर्किंग प्लेन और टोटल लुमेन गिवन आउटपुट आर डिवाइडेड बाय टोटल लुमेन गिवन by लैम्प. ओके, सो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन फैक्टर? यूटिलाइजेशन फैक्टर मीन अगर यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है तो उसका जो लाइट इस फ्लोर में गिर रहा है डिवाइडेड बाय वो जितना लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो जितना लाइट कर रहा है वो सनलाइट के यहाँ पे गिर रहा है. तो टोटल लाइट डो नॉट फॉल इन प्लेन बिकॉज सम ऑफ द लॉसेस आर प्रेजेंट फ्रॉम दिस हेयर टू हेयर. ओके, सो व्हाट इज द यूटिलाइजेशन? टोटल लुमेन रीचिंग on the working plane divided by total lumen given by length. Okay, so this is called utilization factor. And here also given a 0.6. Okay, 0.6 means 60%. Okay, 0.6. And the maintenance factor means MF means maintenance factor. That means total lumen reaching on the working plane. This is the utilization factor and this is the maintenance factor. Illumination under normal working condition. This is the ratio of illumination under normal working illumination under normal working condition divided by illumination when everything is perfectly clean. Illumination when every I do not go everywhere in a details because time span is very large. So I just for your understand हम समझने के लिए थोड़ा मैं लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए. Illumination under normal working condition by illumination when everything is perfectly clean. This is called maintenance factor. Okay, this is called maintenance. Illumination under normal working condition means condition जो भी हो, सिंपल सा कंडीशन में जो इल्यूमिनेशन हो रहा है एक लाइट का उसको कहते हैं इल्यूमिनेशन अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन. और इल्यूमिनेशन व्हेन एवरीथिंग इज पार्टनर. सपोज यहाँ पे बहुत सारे स्मोक है और यहाँ पे एक बल्ब जल रहा है तो जितना लाइट इस फ्लोर में गिरेगा, अगर स्मोक यहाँ पे धुआं नहीं होगा तो ज़्यादा लाइट यहाँ पे फॉल होगा इस फ्लोर में. सो illumination under normal working condition by illumination when everything is perfectly clean. Okay, this is और illumination का और एक एग्जांपल देता हूँ. सपोज एक दीवार पे बल्ब जल रहा है, ऊंचे से लैम्प जल रहा है, अगर वो परफेक्टली दीवार पे रंग होगा और पेरिस पुट्टी होगा, वो जितना सारा रिफ्लेक्ट करेगा, अगर वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा जस्ट दीवार पे रंग नहीं है और सपोज वो पेरिस पुट्टी कुछ भी नहीं है तो उतना सारा रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. तो illumination under normal working condition by illumination when everything is perfectly, that is called maintenance factor. So I am going to the question. Okay, so what is the question say? First of all we calculate the area. What is the area? We just wrote area means A. Okay, area is how much? 12
8 meter. Okay, that is 96. This is the 4 meter is height. So this is not required for area calculate. If we are calculate the total cubic value, then we also multiply the 4. Okay, here also area is 96 meter. And what is the illumination? Illumination is denoted by E. Okay, what is the illumination? The illumination is 300 lux. Okay, 300 lux. So total illumination required is how much? If area is 96 and illumination is 300 per meter, so total illumination is how much? 96 into 300. So total illumination required is how much? A into H, and this is 300 into 96. Okay, so in a question given that the lumen output, or I just wrote it LM. Okay, lumen is how much? 2500. Each lamp, every twin lamp, so every lamp is, every set is how much lumen? Into 2. Okay, that is 5000 lumen. And UF is how much? 0.6. MF is how much? 0.008. और फिक्सर कैलकुलेट करने के एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो हर क्वेश्चन में ही वही फॉर्मूला यूज होता है. ओके, सिंपल सा एक फॉर्मूला. तो फॉर्मूला का है, हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं. फॉर्मूला का है डिटरमाइन द फिक्सर रिकॉर्ड. सो फिक्सर रिक्वायर इक्वल टू, हम इसको इरेज करते हैं, फिक्सर इक्वल टू total lumen required. Total lumen is how much? A into A. Okay, total lumen required A into A. Area is how much? This is the area, and illumination is how much? This one is the illumination. Total area required divided by lumen, each lamp lumen into UA into MA. दिस इज अ सिंपल सा फॉर्मूला जो एवरी क्वेश्चन में यूज किया जाता है. सो एरिया इज हाउ मच? 12 into 8 into illumination 300 lux divided by lux is how much? Sorry, lumen. Okay, lumen is how much? 250 into multiply with 2, so 5000 into 0.6 into 0.08. This is approximately Thames well knows. Okay, so the answer is that determine the total fixture required. So 12 fixture are needed for illuminated this room. Okay.